Welcome back to our performance store. So today we have a Toyota Innova that we are going to work on. So this particular car is got used by this particular client. ये Bombay vehicle है, Bombay registered vehicle है. He bought it as a used condition car, second hand लिया है उन्होंने. और इसको before he takes it home उनको पूरा का पूरा restore करना है. So in this particular car ka project, we are going to cover it in 2 episodes because इसमें हम लोग not just denting painting, but we are also going to show you mechanical work. Also, what all points are supposed to be considered once you buy a used car. मतलब आपने क्या क्या करना चाहिए, ये सब चीजें हम आपको दिखा देंगे. And one major, in जो हमारा मार्केट में का एक बड़ा जो एक ये बोला जाता है कि यूज्ड कार बॉम्बे रजिस्टर्ड नहीं लेना चाहिए बिकॉज रस्टिंग होगा या उसमें प्रॉब्लम्स आएगा. सो विच इज ऑल्सो आई पर्सनली फील इज नॉट नेसेसरी टू बी कंसिडर्ड बिकॉज अगर आप देखने जाएंगे, अगर आपको मैं बताऊं बॉम्बे रजिस्टर्ड और पुणे रजिस्टर्ड व्हीकल्स का, नाउ वी आर सिटिंग हियर इन पुणे, तो अगर बॉम्बे रजिस्टर्ड का बताने जाऊं, अगर एक कोई गाड़ी है, फॉर एन एग्जाम्पल ये एक पर्टिकुलर गाड़ी है, ये अगर 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है और ये बॉम्बे रजिस्टर्ड है, तो ये आपको समझो 8 लाख रुपए में मिल रही है, तो वही पूना रजिस्टर्ड गाड़ी आपको 9 लाख रुपए में मिलेगी. अभी पूना गाड़ी लेने के बाद में, पुणे रजिस्टर्ड व्हीकल लेने के बाद भी यू विल हैव टू डू अ बिट ऑफ मेंटेनेंस ओवर इट बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग इट फॉर योरसेल्फ. एंड बॉम्बे रजिस्टर्ड व्हीकल भी लोगे, कोई भी यूज गाड़ी लोगे, तो उसका थोड़ा सा तो मेंटेनेंस करना ही पड़ता है. बट द बेनिफिट इज व्हाट कि समझो आज आपने ये गाड़ी लिया है 8 लाख रुपए में और इसका आपने मेंटेनेंस किया, 5 साल यूज किया या 2 साल यूज किया, एंड यू गो टू सेल इट एंड इट सेल्स फॉर 7 लाख रुपीज. तो वही जगह पे आपका पूना रजिस्टर्ड जो गाड़ी है वो 8 लाख रुपए में बिकने वाला है. तो लाख रुपए का डिप्रिसिएशन वैसे भी वो गाड़ी में भी है और ये गाड़ी में भी है. तो आई पर्सनली फील कि इट्स नो हार्म इन बाइंग अ बॉम्बे रजिस्टर्ड व्हीकल एज फार एज द व्हीकल इज इन गुड शेप. उसका इंजन अच्छा हो, उसका बॉडी लाइन अच्छा हो, इट्स नॉट अ मेजर एक्सीडेंटल व्हीकल, तो गाड़ी लेने में कोई भी दिक्कत है नहीं. तो या सो इन दिस पर्टिकुलर व्हीकल फॉर रेस्टोरेशन नाउ वी आर गोइंग टू डू एज गुड एज पूरा गाड़ी का ही हम लोग रिपेंट करने वाले हैं बिकॉज देर आर टाइनी स्क्रैचेस हियर एंड देयर विच द कस्टमर वांट्स कि वो पूरा का पूरा चकाचक रहे. तो यू विल सी हियर यहाँ पे एक हल्का डेंट और स्क्रैच है. वैसे ही पूरे बॉडी के ऊपर आप देखोगे, बम्पर हो गया, फिर फेंडर हो गया, डोर हो गया, ये हर पैनल के ऊपर देयर आर टाइनी स्क्रैचेस एंड स्मॉल डेंट्स हियर एंड देयर. तो वो पूरा का पूरा ही ऑलमोस्ट गाड़ी कवर अप किया जाएगा. And that is going to be the exterior wise, so we'll make it look brand new. And interior wise, the entire interior is good except for the seats. The front seats are slightly torn, तो हम खाली आगे का सीट का ये refurb करके ले लेंगे and we'll do a deep cleaning of this particular car. And mechanically there is slight amount of suspension noise, so we'll check that once we put it on the ramp. And whatever is required that will change with OEM Toyota parts. And जो ये है AC भी हम लोग चेक कर लेंगे whether the AC is working perfectly fine, if there is any need to change any parts or anything of that sort. And उसके अलावा एक बार सर्विस कर देंगे. So quick checklist on what you are supposed to do after you buy a second hand car is, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, भले सामने वाले ने आपको बता दिया है कि जिससे आपने खरीदा है गाड़ी कि मैंने अभी जिस सर्विस किया है वॉट एवर इट इज, प्लीज गेट इट चेक फ्रॉम योर ओन मैकेनिक और एक बार सर्विस कर दीजिए. सो योर मैकेनिक विल टेल यू कि आगे जाके आपको क्या क्या एक्सपेंसेस आने वाले हैं और आगे जाके आपको क्या क्या इसका ख्याल रखना पड़ेगा. सो एक बार थरो चेकअप करना और उसका ऑयल चेंज करना इज नॉट गोइंग टू हार्म यू व्हेन यू बाय अ बिग कार. तो उसके बाद में you'll know कि okay, after 6 months this is the expense that I'll have to bear, after a year this is the expense that I'll have to bear, and you'll get to know the life of all the parts. So your mechanic can check it thoroughly and he can tell you. And cosmetically it's all up to you. If you get a very good car and there are just certain panels, so you can get them repainted. एंड अगर आपको चाहिए कि पूरा गाड़ी ब्रांड न्यू जैसा दिखे, तो वो आपको आप जाके आपके मैकेनिक या पेंटर से आप उसका पेंटिंग भी करवा सकते हो. So yeah, we'll start with the denting painting work first, and after that we'll go on to the mechanical part of it as well, so that we can order the parts, we can get it, and we can get the car ready. And wheels are right now slightly dirty. We'll check that as well. अगर वो भी painting का जरूरत पड़े तो वो भी हम करने वाले हैं. So we'll show you the entire process, and yeah, stay tuned to the episode.
Yeah, so guys, this car is completed now. इसका almost full painting था except for the roof. उसके अलावा पूरा का पूरा गाड़ी किया हुआ है and leaving apart the dicky. जितना भी डेंटिंग था, इसका आगे का बम्पर जो डैमेज था वो रिपेयर हो चुका है, बॉनेट एंड पूरा ही गाड़ी हो चुका है, एवरीथिंग इज डन एंड या नाउ इट्स ऑल कंप्लीटेड. रबिंग पॉलिशिंग भी हो चुका है, वॉशिंग भी हो चुका है. नाउ वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द क्लाइंट टू कम डाउन and we'll deliver out the vehicle. As you can see, it's come out really nice. The finish has come out extremely good. The material that was used in this particular car is Chromax DuPont. Whether it's paint or the lacquer, everything was in Chromax DuPont and it's come out really nice. So guys, I hope you like the video, and if you want to see more of these videos, please do throw up cheers in our comment section, and also let us know what kind of videos you like to see. Please do like, share and subscribe with your family, friends and family, so that it will help us grow, and it will help your friends also know about us. And if you ever need paint for your vehicle, अगर वो 50 ml है, 100 ml है, या 1 liter for that sake, you want to do a touch up, you want to do a particular door, yeah, you want to do your entire car, and you don't know whether your painter or your vendor is going to provide you with original DuPont color or no, you can hit us up on the given number below, and we'll provide you with whatever color requirement you have. You can share us your paint code, whatever color code you want, and whether it's 50 ml छोटा सा piece भी मानना है या पूरा गाड़ी मानना है, you can let us know the quantity and we can send across whatever color you want. Yeah, or else if you want the work to be done by us, you can come down in the address given below, or else you can call us up for whatever inquiries you have, and we'll be more than happy to help you out. So cheers guys, see you.